अच्छा, so वही कह रहे हैं कि अगर उसमें एक क्लोरीन होता instead of one bromine, ठीक है? So what would the mm plus 2 peak look like? So ये यहाँ पे given है कि the mm plus 2 peak will have a ratio of 3:1 if there is one chlorine. Vice versa, if there is one bromine, तो दोनों का ratio exactly same होगा. और उसकी what was the reason? क्योंकि bromine has two isotopes and they have equal probability. So bromine has two isotopes and they have equal probability. So molecular ion की mass 94 आए 96 आए, there would be an equal chance of getting 79 and 81. So you're going to detect both particles in the same proportion, same probability. So same height होगी. और chlorine के case में it's going to be 3:1. And then he's saying कि if there are two chlorine atoms, so mm plus 2 m plus 4 की height क्या होगी? That's going to be 9:6:1. ये हमने notes के अंदर भी calculated the probabilities, जिसके अंदर था कि अगर मॉलिक्यूल में ना दो क्लोरीन होंगे तो क्लोरीन का होगा कि there would be three molecular ion peaks, three different particles होंगे that you would call the molecular ion. There would be m, there would be m plus 2, and there would be m plus 4. Either both of them would be 35, or both chlorines would be 37, or one of them would be 35, the other one is 37. So we calculated the probabilities, and the chances were okay, this would be 9/16, this was 6/16, this was 1/16. तो ये बस याद रखना है, ठीक है? So the question would be very simple: 9:6:1. The next part of the question, इसको तो बिल्कुल skip कर दो. X-ray, remember, is no longer part of this. अच्छा, this one, a slightly complicated question, not that complicated question. So you have this one. There's a compound, and the formula is given as CXHYOZ, and he's saying कि there's an mm plus 1 ratio. So what do you find using the mm plus 1 ratio? You find the number of carbon atoms, ठीक है? ये वाला mm plus 1 ratio से based on the probabilities you can figure out the number of carbon atoms. So all you have to do is it's going to be 100 over 1.1 into the m plus 1 height, which in this case I think is 2 divided by, so it would be 2 divided by 25. किसी पास calculator तो वो जल्दी से कर ले, क्या आ रहा है? How many carbons do you have? आयशा, अलीजा, मलिया, इसका क्या आंसर है? 7.27. ठीक है, so the number of carbon atoms is 7. So that means you have 7 carbon atoms, ठीक है? So whatever this molecule is, that's the number of carbon atoms. बाकी what this is given is, so you were given the mm plus 1 ratio, and you're also given the NMR spectrum. ठीक है, that's your NMR spectrum. हाँ ठीक है, that's given. उसने quote किया, that's your NMR spectrum. What does the NMR spectrum tell you? The NMR spectrum is different from mass spectroscopy. What the NMR spectrum tells you is it gives you, कहाँ पे लिखा था? It gives you these 3-4 bits of pieces of information that different hydrogen protons would resonate at a different frequency. So the same type of hydrogen protons would resonate at the same frequency. So what the spectrum tells you is, okay, this one has 3 different chemical environments. So that's the first thing. You figure out the number of chemical environments, and you also figure out the number of protons in those chemical environments. So if there are more protons, then this frequency over here would be absorbed more. If there are lesser protons in that environment, the frequency would be absorbed less. So there are 3 different environments, 3 different resonant frequencies for each of the protons. And the height represents the relative peak, represents the number of hydrogen protons. So यहाँ पे you're given that 4:1:3 is given. So you know that there are 3 chemical environments. That's the first information that you have. So you've got so that means the protons are, I mean, this
the 7 hydrogens, there are 4 hydrogens over here, there's 1 hydrogen over here, and there is 3 hydrogens over here. So the hydrogen protons are distributed in 3 different chemical environments. So now you have to figure out what this structure is. What you have figured out so far is it's 7 carbons, and by looking at the relative heights, you figure out that there are a total of 8 hydrogens. There are a total of 8 hydrogens. And you don't know how many oxygens you've got. So that is still unknown. But that is that you do have oxygens over here. So that is still unknown. And he's asking you to draw the possible structure of X. So based on only this information, you're being asked to figure out the possible. वैसे देख लेते हैं कोई और information. There is no other supporting information. That's it. So I'll repeat, you figure out the number of carbon atoms, you figure out the number of hydrogen protons, you figure out that there are 3 chemical environments, all of that has been figured out. अब यहाँ पे बताओ कि what possible structure can this molecule have? There's another hack, another hint that I'll write. इधर bottom में शायद लिखी भी थी कि हाँ इधर लिखा हुआ था कि a useful tip is that if the carbon and hydrogen ratio is 1:1, then that kind of indicates that there is a benzene. So this carbon and hydrogen ratio, if it's very low, if it's close to 1, then that probably indicates the presence of a benzene ring. ये बात clear है सर को? Yes, sir. क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स में डबल होता है, ठीक है. एल्केन होता तो डबल होता हाइड्रोजन, ठीक है. एल्कीन होता तब भी डबल से ज्यादा होता. So that definitely means and there is a 7th carbon atom as well. So I'm going to draw a 7th carbon atom, ठीक है. And I have no idea how many oxygens I've got. So oxygen कब नहीं दिया हुआ, ये एक second देख लेते हैं कि that is definitely a Z. And the MR, did they give us the MR? The question ही खत्म हो गया. इसके अंदर any data, X-rays is not in your course, so that's out of the question. So ठीक है. So coming back to this, I have no idea how many oxygens I've got. So I would have to open the data booklet. So I'll just keep the data booklet with me. As a first thing, ये जो 4 hydrogens हैं, who do they belong to? They probably belong to benzene. ठीक है. Why did I say that they belong to benzene? Because normally benzene has a lot of hydrogens. Normal जो carbon chains होती है ना, if I look at normal molecules, normally a carbon will not have more than 3 hydrogens if it's a normal carbon chain. If it's an aliphatic molecule, normally any carbon, and you won't have more than 3 hydrogens in the same environment because the carbon will not have more than 3 hydrogens. ठीक है. ये बात clear है? Is this clear? Yes, sir. So the idea is that these 4 hydrogens, they probably belong to benzene. ठीक है, they probably belong to benzene. So let's say these are those 4 hydrogens. बल्कि इनको कोई color से कर लेते हैं. ठीक है, remember it's a puzzle that you're trying to solve. So these 4 hydrogens, they probably belong to benzene, and I've added those 4 hydrogens over here. अच्छा, फिर second one, you've got 3 H's over here. That would probably be CH3. ठीक है, remember 3 H's in the same environment is probably going to be CH3. I mean, all 3 H's are bonded to the same carbon atom. And it's resonating at around 3 to 4. So I look at the data booklet and I look at the NMR. So 3 to 4, where there's a CH3 that's resonating, 3 to 4, that's probably going to be this one. So that's
CH3 with an O, because that resonates at 3 to 4. So that means what that probably means is okay, there's a CH3 that is right next to an O. So this thing, I would have to add an oxygen over here. So these three hydrogens, जिनको मैं let's say black color draw करूं, that's so this is the 3.2 to 4 range. और वो benzene का confirm भी कर लेते हैं. Where does benzene resonate? Benzene resonates between 6 to 9. So that exactly matches. I mean, these hydrogens, they resonate between 6 to 9. So that exactly matches this one. Yeah, the clear is this clear? Yes, sir. Clear. अच्छा पीछे रह गया एक H. Now what is that H? So that is between 5 and 6. So that H could be a phenol because that is 4.5 to 7. So this exactly. So that 1H is probably going to be this one. It's probably going to be an OHH. 5.5 to 6 की middle wala. So you've got these 4 hydrogens on benzene. You've got this CH3 which is next to NO. How did I figure out that it's next to NO? I looked at the data booklet. So उसको fit करना था, so it must be attached to benzene then, and there must be a phenol as well, a phenol OH. ठीक है, is this clear? Yes, sir. और इसका ना वो चेक भी कर लेते हैं कि कोई और तो उसने W091 जैसे कोई और तो उसने acceptable MS4. अच्छा सॉरी, इसकी तो मार्क्स की थी. Sir, हाँ जी, sir, is electrophoresis in our syllabus? हाँ है. बल्कि वो एक दफा क्योंकि चेंज हुआ है सिलेबस, सारी चीजें एक दफा. वो जो बाकी रह गया ना वो तो हार्डली 5-10 मिनट्स की चीज है. मतलब इसके अलावा ना मतलब ये मेन है. Sir, आपने C13 NMR करा दी थी? C13 मैंने ये कराई थी कि C13 NMR जो है ना वो C13 का क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक होता है. ठीक है, मैं C13 NMR का ना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. एक्चुअली जो HNMR है ना, C13 NMR इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है कि हमने क्या क्या था, हमने कहा था कि ये है ना मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हम क्या कहते थे कि इफ यू हैव एन ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो इट वुड रेजोनेट. ठीक है, वो अलाइंड स्पिन और अपोजिंग स्पिन एक्सेट्रा. ठीक है, तो इन तीनों की एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम थी. तो हाइड्रोजन प्रोटॉन एनएमआर के अंदर वी आर फोकसिंग ऑन द हाइड्रोजन प्रोटॉन. कार्बन 13 के अंदर यू गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम, बट यू गोइंग टू फोकस ऑन द कार्बन, क्योंकि कार्बन का एक आइसोटोप होता है व्हिच इज 13 एंड 13 हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, so it will resonate as well. So अब मुझे बताओ कि look at this molecule. मतलब simple ये, it's exactly the same concept. Now if you look at this molecule, now instead of focusing on the hydrogen protons, focus on the carbons. मुझे बताओ कि how many different environments does carbon have? 3. Actually 2. Two है, क्योंकि this carbon and this carbon is exactly the, I mean these two are exactly the same, right? Yes. और वो जो एक है ना, that's different. So this would be resonating at a different frequency. Let's call that F naught. And these two would be resonating at the same frequency. और ये ज्यादा आसान इसलिए क्योंकि there is no splitting in this. उसके अंदर तो वो splitting pattern भी था ना, doublet, triplet. इसके अंदर so the questions on this are going to be even more basic. So it's exactly the same. That's it. Carbon 13. I'll carbon 13 का कोई question भी कर लेते हैं. Usually अच्छा, लेकिन उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं. ये तो कार्बन 13
अच्छा, the same thing except no splitting. So अच्छा, ये जैसा D2O का क्वेश्चन था, ये अब कार्बन 13 का आ गया. ठीक है, he's saying अच्छा पता नहीं, हाँ उससे क्या isomers P and Q were analyzed using carbon 13 NMR spectroscopy. So molecules of cyclo consist of 7-membered rings with 2 carbon-carbon double bonds. I said, so he's saying this thing over here has 2 carbon-carbon double bonds. So second, draw the complete the skeletal formula of the 2 isomers. So what is it going to be? It's going to be कि एक तो इस पे मैं लिख नहीं सकता, अच्छा इसके ऊपर मैं annotate कर देता हूँ. So double bonds, right? So either you'll have double bonds like this, or you'll have double bonds slightly further away. The rest of the positions are going to be exactly the same. Is that clear? या तो दोनों double bonds पे ना this, ठीक है, that's your 2 molecules. He's saying that it's got 2 carbon-carbon double bonds, so we just added that. अब वो ये कह रहा है कि predict the number of peaks that each will. So how many different carbon environments would there be in this one? अच्छा ये दो, are these 2 carbons exactly the same environment or different? Same. ठीक है, so इसका मतलब that's frequency F1. They would resonate at the same frequency. ठीक है. अच्छा, next one, are these 2 the same or different? They're also the same. So that they would resonate at frequency F2, and these 2 are exactly the same environment. ठीक है, they're bonded in exactly the same way, so that's frequency F3. और फिर एक आखिरी कर लेते हैं. This is different from all the others, so that's frequency F4. So how many different peaks there would be? 4 different peaks for this. Clear है बात? Yes, sir. अच्छा, फिर उससे क्या, that will be seen in अब इसमें इसमें भी वैसे 4 ही बन रही है. ये एक different है, that's different from all the others. These 2 are kind of bonded in exactly the same way. These 2 are bonded in exactly the same way. और हाँ 4 ही बन रही है. And these 2 are bonded in exactly the same way. So that's how many. This would resonate at frequency F1, this would resonate at frequency F2, F3 and F4. So दोनों का 4 आ रहा है. इसको फिर देख लो कि हम मतलब it's exactly 4. The carbon 13, इसका देख लेते हैं कौन सा पेपर है. अच्छा लेकिन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है. दिस इज नवंबर. जी सर, क्लियर है. लेकिन वो देख लेते हैं कि दोनों का 4 क्यों आ रहा है, या तो हमने आइसोमर्स गलत ड्रॉ किया है. अच्छा सॉरी, एक सेकंड, ये मैं मिटा दूं पहले. इसको हाउ डू यू, ठीक है. अच्छा, so this one is 1643. अच्छा, हमारे केस में दोनों का 4 आ रहा था, या तो शायद हमने आइसोमर्स में कोई गलती की, हमने क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा. सो ये वाला, अच्छा मेरे ख्याल से एक डबल बॉन्ड हमने 2 बना दिए. नहीं 2 ही थे, और हमने सही बनाया. बोथ रिक्वायर्ड, हाँ 4 ठीक है, ठीक है, वी डिड राइट. तो ठीक है, लेकिन समझ आ गया. कार्बन 13 एनएमआर का क्वेश्चन जो है ना, वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Can we do a question for the splitting for H NMR? हाँ, ये इसी का ये स्प्लिटिंग वाला है ना.
तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है. So saying it contains elements carbon, hydrogen and oxygen, only all carbon-carbon bonds and F are single bonds. बल्कि इस पे मैं लिख नहीं सकता, सॉरी, या तो मैं इसको एक सेकंड क्वेश्चन में उधर कॉपी कर लूं. अच्छा, ये वाला पहले एक सिंपल स्प्रेडिंग वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाला करते हैं कि इधर से स्टार्ट करते हैं. ये अब स्प्लिटिंग वाला आ रहा है, ठीक है क्वेश्चन. So the question is कि there's CXHYNO, ठीक है. So अच्छा, CXHYNO, M peak जो है वो 73 है. M peak का मतलब है जो सबसे लाइटेस्ट आइसोटोप्स है ना, तो MR that's going to come out to be 73 if you use the smaller isotopes. MM+1 ratio is given, that's वो ये given है, so you can figure out the number of carbon atoms. वो बताओ कितना आ रहा है, 100 over 1.1 into 1.7 divided by 48. ये जल्दी से बताओ क्या आ रहा है. 3.22. ठीक है, तो 3 carbon atoms. So it's basically 3 carbon atoms with so C3 HY and NO. अब MR उससे दी हुई थी. The MR was given as 73, so that means figure out what Y is. Minus कर लो इसमें 36. Emily, you have to do it on the calculator. And we'll add 36 plus 14, that's 50 plus 16, 66. So 7 hydrogens होंगे, ये confirm कर लो. Is this 7 hydrogens? Yes, 7. अच्छा, 7 hydrogens. So you have C3H7NO. और यहाँ पे ना you have this thing. अब splitting, ठीक है. Splitting का क्या रूल था? कि splitting का रूल था कि if you, अच्छा, I know this is this. So this is, look at the chemical environments, that's 1, 2 and 3. So this thing is, the hydrogen protons are divided into 3 chemical environments. अच्छा, now based on the splitting rule, N+1 rule, splitting rule था कि अगर 7 वाले के ऊपर ना 0 hydrogens है, तो it's going to be a singlet peak, no interference. If the neighboring carbon has 1 hydrogen, it's going to be a doublet peak. It will interfere. The neighborhood will interfere. 2 hydrogens, triplet. 3 hydrogens, quadruplet. More than 3, so that's a multiplet. So यहाँ पे अब मुझे बताओ कि इसका नेबर कौन है. It's a triplet peak. ठीक है, मैं clearly triplet है. So how many neighboring carbon has how many hydrogens? If it's a triplet peak, the neighboring 2 carbon, hydrogens. 2 hydrogens, ठीक है. So that means the neighbor is probably going to be CH2. ठीक है, but it's going to be a carbon, the neighboring carbon has 2 hydrogens, so it's going to be CH2. This one is a quadruplet peak. मतलब 4 peaks नजर आ रही है ना. So that means the neighbor has how many hydrogens? It's got 3 hydrogens, right? So it's probably going to be a CH3. Is that clear? Yes, sir. So that kind of indicates that ये दोनों साथ साथ हैं. मतलब there's a CH3 and there is a CH2. Okay, this one is going to be a quadruplet peak. And this one is going to be a triplet peak. ठीक है, so both of them would probably be together. ठीक है, so one is quadruplet, the other one is triplet. अच्छा, फिर इस पे आ जाओ. So this is resonating at chemical shift greater than 2. So I'll just take the help of the data booklet. मतलब CH3 तो ये जो है ये तो CH3 है. मतलब ये कह रहा है कि इसके, मतलब ये कह रहा था इसके साथ CH2 है, वो कह रहा था इसके साथ CH3 है, दोनों साथ साथ ही होंगे. ठीक है. So I'm going to analyze this one. कि
it's resonating at 2. So open the data booklet. When does something resonate at 2? It resonates at 2 when it is right next to what? A benzene, which is not in this case. It resonates at 2 when it's right next to a C double bond O. तो उसके साथ भी ना वो 2 पे रेजोनेट करता है. So there must be probably a C double bond O next to it. ये भी क्लियर है? यस सर, लेकिन सर ये जो CH2 वाला कार्बन है क्वाड्रुप्लेट क्यों है? क्योंकि नेबरिंग के ऊपर कितने एच है? 3 है ना. पर उसके पीछे लेकिन उसकी रीजन पूछ रहे हो या मतलब वो? सर रीजन. अच्छा, कि वो स्प्लिटिंग हो क्यों रही है ये पूछ रहे हो ना आप? उसकी उसकी रीजन ये थी कि जो साथ वाला होता है ना, दैट कॉजेज इंटरफेरेंस. कि ये अगर रेजोनेट कर रहे हैं ना, ये तीनों एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही टाइप की शील्डिंग है उनको, मतलब वो एक ही टाइप की शील्डिंग है. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करेगा. अगर एक ही एनवायरनमेंट होगी तो एक ही फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. तो ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आइदर इट्स अलाइन लो एनर्जी स्टेट और इट्स अलाइन, ये जो बाहर पावरफुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अलाइंड विद इट, और इट्स अपोजिंग दैट. दैट्स द हाई एनर्जी स्टेट, दैट्स द एक्साइटेड स्टेट. तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इट नीड्स टू गेन अ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब होगा ये कि जब आपका नेबरहुड होगा ना, नेबरिंग जो कार्बन होगा, ये तीन रेजोनेट कर रहे हैं. ठीक है. they're resonating in this particular external magnetic field which is very powerful. लेकिन ये जो साथ वाले ना, इनकी भी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, वो दैट्स कॉजिंग इंटरफेरेंस. वो क्या करते हैं, कभी वो अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल के साथ, सो दिस विल एक्सपीरियंस मोर मैग्नेटिक फील्ड. तो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी हायर, स्लाइटली हायर. कभी कभार ये जो साथ वाले हैं ना, दे स्टार्ट अपोजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स कैंसल्ड आउट एंड इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू रेजोनेट. तो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिक्रीजेस. और तीसरा सिनेरियो है कि one of them is aligned, the other one is opposing. So these two hydrogen protons would interfere with the external magnetic field. Is the idea clear? यस सर क्लियर है. तो उसकी और कितनी तरीकों से वो इंटरफेयर करेंगे? 3 डिफरेंट तरीकों से ना दे विल इंटरफेयर. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, दैट विल गेट अफेक्टेड बाय इन 3 ways. समटाइम्स इट्स स्लाइटली हायर, समटाइम्स इट्स स्लाइटली लोअर, समटाइम्स वो दोनों इस तरह होंगे, तो इन दैट केस दे वुडंट हैव एनी इफेक्ट. तो दिस वन इज गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट पीक. और फिर अगर इसकी बात कर रहे हो कि ये रेजोनेट कर रहे हैं, तो फिर these one would interfere with this one. So when you have 3 hydrogen protons, the 3 hydrogen protons would cause interference in 4 ways. तो इसकी जो frequency होगी ना, that will change in 4 different ways. Sometimes slightly higher, sometimes slightly lower. तो रूल ये कि नेबरिंग कार्बन के ऊपर ना अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो there is not going to be any interference and it's going to be one single resonant frequency. साथ वाले कार्बन पे ना एक हाइड्रोजन है ना, तो 2 तरीकों से इंटरफेयर करेगा. या तो वो एक्सटर्नल के साथ मिल जाएगा और आपके ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगा, या फिर वो साथ वाला प्रोटॉन जो है ना, वो एक्सटर्नल को कैंसिल आउट करेगा. तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हो वो फिर थोड़ी कम होगी. ठीक है, ये क्लियर है बात? जी तो सर क्लियर है. तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला. आपको बस ये पता होना चाहिए मेनली कि स्प्लिटिंग होती है. सिंपल ये कि ये नेबरहुड एक दूसरे को के साथ इंटरफेरेंस कॉज करते हैं, विच इज व्हाई देयर इज स्प्लिटिंग. और उसमें भी याद रखना है कि स्प्लिटिंग कौन नहीं करता, यहाँ पे लिखा हुआ भी था कहीं पे. हाँ, ये याद रखना है कि OH और NH2 स्पेशल केसेस हैं, दे डोंट कॉज एनी स्प्लिटिंग, क्योंकि उनके ना बीच में लोन पेयर्स आ जाते हैं. तो वो उस प्रोटॉन को ना शील्ड कर लेता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी अगर बीच में ना यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाए ना, अगर O हो यहाँ पे, तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो शील्डेड होगा. इसकी मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी एबल टू अफेक्ट द नेबरिंग प्रोटॉन्स. तो OH और NH2 का याद रखना, दे डोंट कॉज स्प्लिटिंग, नाइदर दे स्प्लिट देमसेल्व्स. ठीक है, दे नेवर बिकम डबलेट्स और ट्रिपलेट्स. अच्छा, वापस आ जाते हैं. तो स्प्लिटिंग का था ना, तो ये भी क्लियर, ये क्लियर है यहाँ तक. सीरियल बॉन्ड वो मैंने डेटा बुकलेट से फिगर आउट कर लिया, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर. अच्छा, पीछे कितना रह गया हमारे पास? वी हैव
3 carbons, that's gone. 7 hydrogens, that's 3. 2, the what's left? How many hydrogens left? 2 more, right? And there's 1 left, 1 N left. तो ये होगा, मतलब ये पीछे रह गया ना. तो ये जो चीज है ना, ये जो 6 के ऊपर है, that would probably be this one. 5 to 12 के अंदर ना रेजोनेट करता है. So it's probably this one. ठीक है, is this clear? Yes, sir. चलो अब ये बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं कि यहां से शुरू हो रहा है. So the question is, और ये काफी मेरे ख्याल से कितने मार्क्स का है? काफी बड़ा क्वेश्चन है, पूरा 15 मार्क का. ठीक है, usually 7-8 marks का आता है. Now compound F contains the elements carbon, hydrogen, oxygen. All carbon bonds are single bonds. ठीक है, so make sure. So it contains carbon, hydrogen, and oxygen only. All single bonds. सारी information, every single piece of information is very, very important. The structure of F was analyzed by mass spectroscopy and infrared and NMR spectroscopy. मतलब सारी चीजें include करती है. The the M peak, the smallest peak, I mean the lightest molecular N peak, that's 90. That's the MR. The ratio, ये जल्दी से number of carbon atoms बता दो कितने आ रहे हैं इससे. 100 over 1.1 into 0.7 divided by 22.1. What do you get? $2.87. ठीक है, तो three carbons, right? अच्छा, तो ये पता लग गया, that's 3 carbons. Use the ratio to, we did that. Suggest the molecular formula of F. अच्छा, suggest भी कर दें. तो वो कह रहे कि, तो उससे बताया क्या, हमें उसने बस बताया कि 90 है. इसका तो पता लग गया हमें. अब मुझे बताओ कि 3 कार्बन एटम, हाउ डू यू मेक इट 90? 3 कार्बन इज 36. पीछे क्या रह गया? रिमेंबर हमने 90 बनाना है उसे. सो हाउ मेनी ऑक्सीजन शुड आई नीड? ये जरा कैलकुलेटर पे करो कि व्हाट्स लेफ्ट. 54. तो 54 में ऑक्सीजन 16 into 3 कितना हो गया? 48. 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए ना. Sir, 3 oxygens के बाद 6 रह जाता. तो 6 हाइड्रोजन, राइट? इट्स probably going to be C3H6O3. मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि it's a carboxylic acid, और दूसरी साइड पे ना इट्स एन एल्डिहाइड. तो H पूरे नहीं हो रहे ना. ठीक है, that's not 90. So maybe it's not an aldehyde, maybe it's an alcohol. तो H पूरे हो गए, right? And that is 90, right? तो मतलब इसके अंदर हमने ऐड करना था 3 ऑक्सीजन ऐड करने थे और प्लस 6 हाइड्रोजन, राइट? ये क्लियर है? this is Yes, the sir. this is the formula. And this is, remember, this is one of the isomers. We don't know if this is the right one. मतलब इसके बहुत सारे isomers हो सकते हैं ना कि the OH might be, बल्कि ड्रॉ कर लेते हैं सारे. रिमेंबर मैंने कहा था कि isomers ड्रॉ करना, that's very helpful. तो one of them would be कि OH could be in the middle. अच्छा, डबल बॉन्ड ओवर, मतलब यही 2 isomers है. I'm not letting go. I mean, there are other isomers as well. लेकिन what I've seen is कि when he did the infrared spectroscopy, so 3350 के ऊपर ना, sorry, 2680 पे there's a very broad and strong peak. तो very broad infrared spectroscopy खोलो का infrared. अच्छा, OH की peak ना ये वाली, strong and very broad, between 2500 and 3000. तो ये कौन से OH की peak होती है? That's the carboxylic acid OH. इसका मतलब है it has a carboxylic acid. मतलब ये infrared spectroscopy से ना, तो मैंने सिर्फ पेपर किधर चला गया? अच्छा, तो what I did was I only made those peaks. तो type of bond कौन सा है? OH, and functional group is the carboxylic acid functional group, उसका OH. ठीक है, is this clear?
Yes, sir. अच्छा, तो I'm not going to draw all the isomers. I'm only going to draw those isomers जहां पे there is a carboxylic acid, क्योंकि infrared spectroscopy में confirm हो गया there is a carboxylic acid. So the only two options now, अब molecule figure out करना, that has become very easy. That I have only two options. Either the OH is on this one or the OH is on the middle one. अच्छा, फिर उससे कहा है कि there's a broad and strong peak at 3350, 30. That's probably an OH peak, a simple alcohol peak. Like if you look over here, 3200 से आगे जो है ना, that is OH. So it's definitely N तो वैसे ही निकल गया because there is no N in the molecule. So this one is already eliminated. तो पीछे the only thing that's left is OH. So that is definitely OH. तो वो तो दोनों के अंदर ही है. तो चलो ठीक है, type of bond that's OH again, or it's an alcohol. And then there is a very strong peak at 1725. Remember, infrared के अंदर the serial bond O is very easy to identify. ठीक है, infrared के अंदर ना सबसे पहले target ही क्या करो, serial bond O and OH. These are the ones that are easy to identify. So whenever you have a very strong absorption at 1700, that's C double bond O. तो वो तो दोनों के अंदर ही है. And it belongs to the carboxylic acid functional group as well. ये clear है? Yes, sir. अच्छा, पीछे रह गया ये दो, इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है. वो NMR पे अब गया होगा क्वेश्चन. तो कितनी एनवायरमेंट्स है? 1 2 3 4. ठीक है, दैट्स 1 environment, 2 environment, 3 environment. नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स ही पता लग जाएगा. पहले वाले का बताओ, how many different environments, proton environments do you have? The first one. 3. उसका देख लेते हैं. That's there's this environment. These two hydrogens are in the same environment. ये दो hydrogens भी exactly same environment में, and this is in a different environment. So the 4 है. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, और इसका कर लो कि how many environments for this one? One is OH. This OH is different, so that's a different environment. There's this H, and these three H's are in the same environment. So that's again 4 environments, right? So ठीक है, so we are not able to figure out based on the environment. So environment से हमें नहीं पता लगा कि ये किसका है. Look at the splitting now. Let's focus on the splitting. अच्छा, OH peaks, remember, is always a singlet. This is an OH peak, so that is also going to be a singlet. ऊपर भी जो OH peaks होंगे ना, they would be singlets. हमने पढ़ा था कि OH does not cause splitting. अच्छा, इसका मुझे बताओ कि इसके neighborhood में कितने hydrogens हैं? This one. The neighboring carbon has 1 H, right? Clear है बात? Yes. OH को आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है? OH को आपने splitting में इन्वॉल्व ही नहीं करना. So the neighboring carbon has 1 H. So that means this is going to be a doublet. अच्छा, इसका बताओ कि इनके neighboring carbon atom पे साथ वाले पे there is 2 hydrogens. So this one is going to be a triplet, right? Clear है ये? Sir, OH के लिए singlet होगा. हाँ, OH को अपने splitting में इन्वॉल्व ही नहीं करना. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि OH और NH2 are always singlets. They don't cause any splitting. ठीक है, तो आपने जब भी आप splitting neighboring carbon को देख रहे होगे तो आपने बस OH को इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो. ठीक है, तो ये क्लियर है कि इसके जो नेबरहुड में, क्योंकि वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, वो शील्ड कर देगा. तो म्यूचुअल इंटरफेरेंस जो है ना, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. अच्छा, तो इन दोनों के नेबरहुड में कितने हाइड्रोजन है? देयर आर 2 हाइड्रोजन्स नेक्स्ट डोर. क्लियर है? सर, तो मिडिल कार्बन का भी ट्रिपलेट होगा. हाँ, ये भी ट्रिपलेट होगा क्योंकि ये वाला तो इंटरफेरेंस कॉज ही कर रहा, साथ वाला नेबरिंग. सो दैट्स गोइंग टू बी, सो 2 ट्रिपलेट्स, राइट? अच्छा, नीचे वाले में भी देख लो कि ये क्या होगा, ये वाला H.
नेबरिंग कार्बन पे कितने H है? 3. 3. तो दिस इज गोइंग टू बी अ, Quadruplet. अच्छा अब इससे फिगर आउट हो जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग पैटर्न इज डिफरेंट। तो वहां पे 2 ट्रिपलेट्स आ रही है, यहाँ पे क्वाड्रुपलेट आ रहा है, ठीक है। सो ये वाला क्वाड्रुपलेट वाला, so it's this one, but this is the right molecule. So splitting pattern doublet, singlet, singlet, quadruplet. So you have a doublet, singlet, singlet and a quadruplet. Clear है? पता लग गया। और ये भी पता लग गया कौन कौन है। डबलेट वाला कौन सा है, ये कौन है? दिस इज दिस वन। यानी केमिकल शिफ्ट 1.2 कर लो, केमिकल शिफ्ट 1.2 के ऊपर ना, इट्स दिस वन। क्वाड्रुपलेट कहाँ पे आ रही है? क्वाड्रुपलेट इज अराउंड लेट्स से 3.9, so that is at 3.9। और 2 सिंगलेट्स हैं, इनको फिगर आउट करना पड़ेगा बाय लुकिंग एट द डेटा बुकलेट, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सिंगलेट्स। सो वन इज अ नॉर्मल अल्कोहल, द अदर वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड OH। तो उसके लिए इफ यू ओपन द डेटा बुकलेट तो NMR वाला, तो OH वाला नॉर्मल अल्कोहल 0.5 to 6, कार्बोक्सिलिक एसिड 9 to 13। और रिमेंबर दिस, ये मैंने इसका लिखा था कि ये टिप्स में मैंने ऐड किया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वो है ना फिगर आउट करना, it's easy to identify using data booklets, the carboxylic acid proton, ठीक है। that's very easy to identify because उसकी एक अलग ही फ्रीक्वेंसी है, बाकी सारों से डिफरेंट है, 9 to 13। so that would make it very easy to identify। so this is the carboxylic acid OH। यानी अगर मैं वापस जाऊँ ना तो it's this one is the one that's resonating at 13, ठीक है। क्लियर है? ये हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। और रिलेटिव पीक एरिया का मतलब है इट्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। हाइट उसकी वजह से डिटरमिन होती है ना। तो रिलेटिव पीक एरिया, जो हाइट रिलेटिव हाइट होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। तो हमें वो भी पता लग गया। सो द रेशियो ऑफ द हाइट शुड बी, इसकी फ्रीक्वेंसी मोर ऑफ इट इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब 3 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। हाँ 3 रेशियो 1 रेशियो 1। सो रिलेटिव हाइट्स वुड बी 3 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। तो ये भी क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. What do we write in type of proton? वही मतलब ये लिखोगे ना कि ये है, ये है, ये चीज है, ये चीज है। और इसकी मार्क स्कीम खुली हुई थी, मैं वो दिखा देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ही था ना। 1 सेकेंड। हाँ वही है बस, वो बताना था कि OH, वो OH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, मतलब वो लिखा हुआ है बस, मतलब एग्जैक्टली यही कि दिस इज CH3, this is the one CH next to O, this is carboxylic acid OH, that's a normal OH। मतलब उसने उसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। वो क्लियर है ये बात? Yes, sir. Clear. अच्छा बाकी ये कि डिस्क्राइब एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग पैटर्न, तो वो तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। D2O डालने से क्या होगा? विच ऑफ D2O का आई हैड एक्सप्लेन्ड यहाँ नोट्स में कि D2O डालोगे ना तो कहाँ के D2O ऊपर था शायद। अच्छा हमने पहले एक्सप्लेन किया था ये वाला, ड्यूट्रियम इज a hydrogen that does not resonate, it's an isotope of hydrogen, does not resonate। so ये जो OH और NH2 वाले अल्कोहल और एमाइड, जिसमें भी OH और NH2 आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर एमाइड्स, ये जो है ना ये इनके जो प्रोटॉन्स हैं दे गेट डिस्प्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम आयंस एंड द पीक डिसअपीयर्स, क्योंकि ड्यूट्रियम डज नॉट रेजोनेट। तो अगर हेवी वाटर के अंदर ऐड करोगे ना D2O के अंदर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH वाला H है ना, दैट विल गेट रिप्लेस्ड इवेंचुअली बाय ड्यूट्रियम एंड ड्यूट्रियम डज नॉट रेजोनेट। तो आपकी कौन सी पीक्स, वो जो सिंगलेट पीक्स थी ना, दे विल नो लॉन्गर बी प्रेजेंट, क्योंकि हेवी वाटर के अंदर व्हाट विल हैपन इज कि
ये वाला जो है वो डी, और यहाँ पे भी ड्यूट्रियम का आइसोटोप आ जाएगा, और ड्यूट्रियम डज नॉट रेजोनेट क्योंकि it does not have a, it has even numbered nucleons, so it has no net magnetic field and it will not resonate. ठीक है, ये भी क्लियर है बात, आखिरी वाली बात। यस सर क्लियर है। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एफ, अच्छा क्वेश्चन हमें ना यहाँ पे ही पता लग गया था, क्वेश्चन जो था, रिमेम्बर क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वो बाकी चीजें जो उसकी एनालिसिस था, मतलब द क्वेश्चन आंसर तो हमें यहाँ शुरू में ही पता लग गया था कि हम पहले यहाँ पे पहुंचे C3H6O3, हमने तुक्का लगा के फिगर आउट कर लिया कि हाँ ठीक है यही होगा। उसमें भी सेंस बनानी है कि व्हाई डिड आई गो फॉर 3 ऑक्सीजन। रिमेम्बर कि मॉलिक्यूल डज नॉट हैव वो, मतलब 2 हाइड्रोजन और 25, सॉरी 2 ऑक्सीजन और 25 हाइड्रोजन भी हो सकते थे, लेकिन मसला ये कितने ज्यादा हाइड्रोजन होते नहीं है मॉलिक्यूल में। सो मेक एन इंटेलिजेंट गेस, वी मेड एन इंटेलिजेंट गेस ओवर हियर। इधर हमें फौरन देख के पता लग गया था। इंफ्रारेड में याद रखना कि इंफ्रारेड के अंदर ना, इफ यू हैव अ लुक एट इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड की टिप ये कि किधर हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में ना ये दो बॉन्ड जो है ना बड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, खास तौर पे ना द कार्बोक्सिलिक एसिड OH25 3 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड, वो मतलब क्लियरली उसको रटा लगा लो, दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, OH bond that is vibrating at this particular frequency. और serial bond वो भी बहुत clearly identify होता है 1700 पे, it's a unique absorption, no one else resonates even near that frequency. So अच्छा फिर किधर क्वेश्चन, तो मैं वैसे क्वेश्चन का वो बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ। Isomers, make sure draw isomers, isomers are going to be very helpful. इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको देख के ना you can't solve this. I mean it's next to impossible to solve this. The only way to do that is कि आपके पास 2-3 कैंडिडेट्स पहले हो, ठीक है, वो आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो। तो आई फिगर आउट कि it's C3H6O3 and I figure out it's got a carboxylic acid. तो उससे मैंने 2 स्ट्रक्चर्स मेरे ज़हन में आए कि these are the only 2 possible structures. जब आइसोमर्स आपके सामने होंगे फिर उनको मैच करना दैट्स इजी, ठीक है। रिमेम्बर इसके ऊपर डायरेक्ट जंप नहीं करना, एज सामने कोई 3-4 आइसोमर्स बने हुए हो तब दिस वुड मेक सेंस, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली इट वुड बी वेरी हार्ड। और बाकी तो फिर इसी का एनालिसिस था कि उसमें कोई नई चीज नहीं थी। चलिए ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, बल्कि कल की क्लास में ना वील ट्राई एंड कवर द रेस्ट। वो कुछ भी नहीं है उसमें, बस वो पुराना ओ लेवल्स की क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बहुत बेसिक्स है। तो मैंने एक चीज वो देखनी भी थी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सिलेबस था, आई एम श्योर के, हाँ, और बहुत बेसिक्स है, मतलब क्रोमेटोग्राफी से ओ लेवल्स में होती थी ना, उसी उसी तरह का है, तो वो भी है। तो ये जो 2-3 चीजें ये फिर हम कल कर लेंगे। चले ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके टेक केयर,